General wave for waves, I've already discussed with you people that wave is basically the transfer of energy from one point to another without the transfer of medium. So let's say you have this rope which was initially at rest. Initially at rest, as you begin this oscillator to oscillate, just observe the particle over here. इस green वाले particle को आप observe करो. You will find that as the oscillator oscillates, this green particle moves up and down like this. ये green particle oscillate करेगा ऊपर और नीचे ऐसे. जब ये green particle oscillate करेगा, it will begin this neighboring particle to oscillate as well, then its neighboring particle, and so on and so forth. And finally, you will see a wave moving from left to right like this. There's this wave moving from left to right. There's this energy transferred from left to right without the transfer of this green particle, which began the oscillations. इस ग्रीन पार्टिकल्स की वजह से सारी ऑसिलेशंस हुई थी. ये ग्रीन पार्टिकल अपनी जगह पर मूव कर रहा है अप एंड डाउन, अपनी जगह पर ऑसिलेट कर रहा है अप एंड डाउन, and you see that the wave moves along the length like this. So basically, what is wave? Wave is the transfer of energy from one point to another without the transfer of medium. One point to another without the transfer of medium. And waves की जब हम बात करेंगे तो waves में हमारे पास basically there are four topics in this section. It's general wave properties, it's electromagnetic waves, it's light and sound. So we'll be going through all these topics inshallah. General wave properties mein, I just discussed with you that wave is the transfer of energy from one point to another without the transfer of medium. अब अगर हम types of waves की बात करें, so we have one type of wave which we call the transverse wave. Transverse wave में क्या होता है? Transverse wave में जो direction of vibration of medium है, जो direction of vibration of medium, you can also call it direction of vibration of particles. It is perpendicular to the direction of the wave. जैसे for example यहाँ मैंने discuss किया था अभी आपके साथ, as this green particle oscillates up and down, as this green particle oscillates up and down, the energy is transferred to the right. The wave moves to the right. So this is oscillating vertically up and down. This is oscillating vertically up and down. And the wave is moving to the right like this. So this is basically the two directions being at 90 degrees to each other. ये जो दो directions हैं ये आपस में 90 degree पे. This is the direction of oscillation, and then this is the direction of wave propagation. So wave propagation means wave transfer. Wave propagation means energy transfer. You can say energy propagation, you can say wave propagation. So in every wave, there are two directions. One is the direction of oscillation of medium, direction of vibration of medium, and the other one is the direction of wave propagation, the direction of energy transfer. Right? So, अगर मैं transverse waves की बात करूं, all water waves are transverse waves. मैं transverse waves की बात करूं तो जितनी की electromagnetic waves हैं, they are all transverse wave, like light हो गया, X-rays, gamma rays, ultraviolet, visible light, microwaves. These are all transverse waves. Waves that are formed on a rope, on a string that we on a string that we have just seen, these are all
ट्रांसवर्स वेव्स। सो ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है? द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन, it is at right angle to the direction of oscillation of medium, at right angle to the direction of vibration of medium। अच्छा जी, उसके बाद दूसरी जो चीज है, इट्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव की अगर मैं बात करूं, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है? द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। सिंस हर वेव में दो डायरेक्शंस होती हैं, एक डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन होता है पार्टिकल्स का यानी मीडियम का, एंड वन इज डायरेक्शन ऑफ वेव। So in a longitudinal wave, the direction of vibration of particles, the direction of wave, the direction of energy transfer, they too are parallel to each other. So longitudinal wave में direction of vibration of particles, direction of wave, it is parallel to each other. अच्छा, जैसे for example यहाँ पर देखिएगा, sound waves, spring waves, seismic P waves, these are all longitudinal waves। यहाँ मेरे पास, look at this, ये एक spring है। If I begin to vibrate this spring forward and backward, इस spring को अगर मैं forward backward यूं vibrate करूं, so what will happen? You will see a compressions and rarefactions going like this। इसको जैसे ही मैं oscillate करता हूं, इसमें compressions and rarefactions बनना शुरू हो जाती हैं। So what we observe here is कि आपके पास जो spring है, इसको आप oscillate कर रहे हो horizontally, इसको आप oscillate कर रहे हो horizontally। इसमें जो waves बन रही हैं, जो compressions बन रही हैं, वो भी आपके पास horizontally move कर रही हैं। जो rarefactions बन रही हैं, वो भी horizontally move कर रही हैं। So the direction of vibration of medium, the direction of vibration of particles, the direction of wave, they all are parallel to each other। They all are parallel to each other। इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। और अगर हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव की, you will find sound wave being longitudinal, spring wave being longitudinal। क्यों? इसमें जो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन है वो भी हॉरिजॉन्टल है, और जो डायरेक्शन ऑफ वेव है वो भी हॉरिजॉन्टल है। जिस डायरेक्शन में एनर्जी प्रोपोगेट हो रही है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, वो भी हॉरिजॉन्टल है यानी पैरेलल है। राइट? एनी प्रॉब्लम, एनी कंफ्यूजन सो फार? उसके बाद एक चीज आती है कंप्रेशन। कंप्रेशन क्या होता है बेटे? Compression is basically a region where the spring coils, where the particles are close to each other. They are closer together. And then there's a region we call a rarefaction. Rarefaction is a region where the particles are further away from each other, where the gap between particles is more. You can also say it this way: compression is a region of a high pressure, जहाँ particles closer together होते हैं। Rarefactions are regions of low pressure, जहाँ particles, जहाँ spring के coils में gap ज़्यादा होता है। Then there's a third type of wave जिसको हम mechanical wave बोलते हैं। So mechanical wave एक ऐसी wave है जिसको हर वक्त medium की जरूरत पड़ती है। It cannot transfer energy without the medium। जैसे air particles है, सही है? Air की अगर मैं बात करूं, so मैं बात कर रहा था मैकेनिकल वेव्स की। मैकेनिकल वेव्स नीड मीडियम टू ट्रांसफर एनर्जी, सही है? इसमें आपके पास मैं बात कर रहा था वाटर वेव्स की। अगर वाटर पार्टिकल्स ना हो, नो वेव्स कैन बी फॉर्म्ड। वाटर पार्टिकल्स की वजह से ही वाटर वेव्स बनती हैं। अगर आपके पास साउंड वेव की मैं बात करूं, साउंड वेव में इट्स ड्यू टू एयर पार्टिकल्स। एयर पार्टिकल्स नहीं होंगे तो साउंड वेव नहीं बन सकती। इफ आई टॉक अबाउट रोप वेव्स दैट आई हैव जस्ट ऑब्जर्व्ड, it depends on what? It depends on the particles of the rope। rope के particles नहीं होंगे, energy transfer नहीं हो सकती। Right? So mechanical wave is a wave which needs a medium to transfer energy from one point to another। अगर medium नहीं होगा तो ये energy transfer नहीं हो सकती। अच्छा, उसके बाद the next type of wave is, if someone wants to take a screenshot, please do it fast।
एंड किसी पास ये नोट्स नहीं है तो मेक श्योर आप ये नोट्स बनाते जाएं, दैट विल ओनली हेल्प यू, अदरवाइज सिर्फ सुनने से काम कभी नहीं होता। सो राइट, चलिए अब एक और टाइप की वेव की बात करते हैं, एंड दैट इज, ये तो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया कि स्प्रिंग में आपके पास कॉम्प्रेशन, आप इसको ऑसिलेट करते हो, यू लेफ्ट राइट एंड यू सी compressions, reflections going left right, right? So एक और टाइप की वेव है which we call the electromagnetic wave. Electromagnetic wave is a wave that does not need a medium to transfer energy. ये मीडियम के बगैर एनर्जी को ट्रांसफर कर सकता है, जैसे कि सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, gamma rays, X rays, ultraviolet, visible light, microwaves, radio waves. These are all electromagnetic waves. They do not need an energy, a medium to transfer its energy. ये जो मैंने मैकेनिकल वेव्स की बात की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात की, लाइक गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल लाइट, ये सारी की सारी ट्रांसवर्स भी हैं. So it's possible for a wave to lie in two categories. सही है, जैसे स्कूल में डिफरेंट सोसाइटीज होती हैं तो एक स्टूडेंट डिफरेंट दो सोसाइटीज में हो सकता है, ऐसी आपके पास जो डिफरेंट वेव्स हैं दे कैन बिलोंग टू टू डिफरेंट कैटेगरीज. लाइक मैं वाटर वेव की बात करूं तो वाटर वेव इज जस्ट अ ट्रांसवर्स वेव एज वेल एज मैकेनिकल वेव. उसमें आपको मीडियम चाहिए, वाटर पार्टिकल्स चाहिए, तब वाटर वेव बन सकता है. एंड ट्रांसवर्स वेव कैसे है कि वाटर के पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं अप एंड डाउन और वेव ट्रैवल करता है हॉरिजॉन्टली. सो इसीलिए आपके पास ये कौन सी वेव है, ट्रांसवर्स वेव है. अब मैं बात करता हूँ लाइट की. लाइट आपके पास जो है ना, ये मैकेनिकल सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. इसके लिए एनर्जी की मीडियम की जरूरत नहीं होती. जैसे फ्रॉम द सन टू अस लाइट कम्स when it passes through a vacuum. सन और हमारे बीच में वैक्यूम है, लाइट फिर भी वहां से होकर हम तक पहुंचती है. क्यों? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट डज नॉट नीड अ मीडियम टू ट्रैवल. इसी तरीके से अगर मैं लाइट की बात करूं तो लाइट इज आल्सो ट्रांसवर्स वेव. क्यों? लाइट में जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं दे ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट राइट एंगल टू ईच अदर. सो वेव जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं, जिनको मीडियम की जरूरत नहीं होती एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए, इट्स दिस लिस्ट: रेडियो वेव्स, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, माइक्रोवेव्स. ये सब के सब क्या है? these are electromagnetic waves. इनको याद करना जरूरी है, इनका पैटर्न याद होना जरूरी है. एंड वन वे that I remember this is with the help of this sentence, which is rich man in Venice use X-ray guns. Rich man in Venice use X-ray guns, where R stands for radio waves, man stands for microwaves, IN infrared, Venice is visible light, use is ultraviolet, and X-rays is X-rays, gun is gamma rays. इसको इस ऑर्डर में याद करना जरूरी है. यहीं पर देखिएगा रेडियो वेव्स जो है, इसके लिए आपको एक बात मालूम होनी चाहिए कि दे हैव द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी. तो गामा रेज इसका उलट हो जाएगा, दे हैव द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एंड लॉन्गेस्ट फ्रीक्वेंसी. ये जरा जल्दी से अपने पास नोट कर लें, मैं 1 मिनट दे रहा हूं इसके लिए. Right. नेक्स्ट चीज की बात करते हैं अब, electromagnetic waves need no medium. Now,
it's time for some important terms to understand. उस terms को समझना जरूरी है and उसमें से पहला term है amplitude, फिर है crest, फिर है trough, then wavelength है, then time period है, frequency भी है. So wavefront as well. Amplitude की जब मैं बात करता हूँ तो what is amplitude? ये देखो मैं एक wave बना रहा हूँ. This is one wave and you can see कि this wave has a lot of displacements. इस वेव की अगर मैं बात करूं इस वाले पोजीशन की, दिस इज द मीन पोजीशन, दिस इज द रेस्ट पोजीशन. यहाँ इस वेव से अगर इसकी मैं बात करूं, दिस इज रेस्ट पोजीशन. सो व्हाट्स हियर, ये आपके पास है रेस्ट पोजीशन. इसको हम बोलते हैं मीन पोजीशन, इसको हम बोलते हैं रेस्ट पोजीशन या इक्विलिब्रियम. सो यहाँ देखिएगा इस इक्विलिब्रियम से थोड़ी सी डिस्टेंस, इससे थोड़ी सी और डिस्प्लेसमेंट ऊपर, थोड़ी सी और डिस्प्लेसमेंट, एंड दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. एज यू मूव अपवर्ड द displacement from equilibrium increases, and as you move to the highest displacement from equilibrium, then that is known as amplitude. The maximum displacement from the mean position is amplitude. The maximum displacement of a point on the wave from the mean position is amplitude. It can be this way as well. ये यहाँ से लेकर यहाँ तक. This is an amplitude. यहाँ से लेकर यहाँ तक. देखो, this is also an amplitude. So an amplitude is just basically maximum displacement from equilibrium position, maximum displacement from mean position, maximum displacement from rest position. You can also call it height of a wave. इसको आप height of a wave भी बोल सकते हो. Next thing is crest. Crest is basically this single point of maximum displacement. Trough is this single point of maximum displacement. Crest, this single point of maximum displacement. So crest is basically point of maximum displacement above equilibrium. Trough is point of maximum displacement below mean position, below equilibrium. फिर बारी आती है वेवलेंथ की. वेवलेंथ क्या है मेरा बच्चा? बस दो टाइप की वेव्स हो सकती है. It can be either a wave which has displacement on x-axis and distance on y-axis, or another wave which also has a displacement on y-axis and a time on x-axis. So displacement distance wave हो सकती है या हो सकती है displacement time wave. अब इन दोनों में फर्क क्या है जरा देखिएगा. ये ट्रफ मैंने बता दिया आपको. अगर मैं यहां से लेकर यहां तक चेक करूं, this is one crest and then this is the next consecutive crest. The next crest is called consecutive crest. ये एक पॉइंट है, इसका बिल्कुल नेक्स्ट ऐसा पॉइंट, it's a consecutive point. सही है. So basically wavelength is the distance between two consecutive points, two same consecutive points, right? एक पॉइंट ये है, बिल्कुल अगला ऐसा पॉइंट कहाँ है मेरा बच्चा? इधर है. So these are two points in phase. आप कह सकते हो दो consecutive points. आप कह सकते हो these are two consecutive crests, right? So दो consecutive crests के बीच का जो distance होता है, that's called wavelength. And इसको इस symbol से represent करते हैं, which is called lambda. It's just like an upside down Y. Right. अब एक बात और करते हैं. देखो wavelength यहां से लेकर from this point ये वाला till this same next point, ये दोनों points के बीच का जो gap है, this is also wavelength. This is also wavelength. यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो gap है, ये जो distance है, this is also wavelength. So it's not necessarily to be the length between two consecutive crests. It can be any two same points. कोई भी दो same points, consecutive same points जो है wave पे, उनके बीच का distance, it's one wavelength. Look at this. This is one trough. This is the next consecutive trough. So distance from one trough to the next consecutive trough, it's a wavelength, right?
मुझे जल्दी जल्दी बताओ, चीजें समझ आ गई? एनी प्रॉब्लम, एनी कंफ्यूजन सो फार? ठीक। मरियम, यूसुफ, ऑल गुड सो फार? सब समझ आया? ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब टाइम पीरियड की बात करें, देखो अगर मैं वेव ऐसी बनाऊं जिसमें मेरे पास एक्स एक्सिस पे टाइम है, बिल्कुल वही वेव है, बट नाउ दिस टाइम मेरे पास एक्स एक्सिस पे टाइम है। अब एक्स एक्सिस पे जब टाइम आ जाता है मेरे पास, व्हाट इज दिस? टाइम पीरियड बेसिकली क्या होता है? टाइम पीरियड बेसिकली, जस्ट गिव मी 1 मिनट बेटे। राइट, सो नेक्स्ट जो, ऑलराइट गाइस, सो नेक्स्ट जो चीज है वो है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है बेटा? इट्स द डिस्टेंस बिटवीन, सॉरी, इट्स द टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट्स और टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ्स। आप इसको यूं भी बोल सकते हो, इट्स बेसिकली द टाइम फॉर वन वेव टू कंप्लीट। देन उसके बाद एक और चीज आती है, फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? इट्स द नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर यूनिट टाइम। एंड फ्रीक्वेंसी की जब हम बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, दैट इज frequency is equals to number of waves upon time. Number of waves upon time. This is the formula that you can use to find frequency. And if you have just one wave,
if you have just one wave time period given, or you have just time period given, you can simply write it like this as well. Frequency is equals to 1 upon time period. Alright, उससे अगली जो term है, that's wavefront. Wavefront क्या होती है बेटे? It's an imaginary line that can join all the crests. For example, यहाँ देखिएगा, these are waves. यूं आपके पास wave बन रही हैं ये. These waves are moving to the right. These waves are moving to the right like this. ऐसी waves travel कर रही हैं. 4 waves हैं. इन 4 waves का पहले का crest, दूसरे का crest, तीसरे का crest, चौथे का crest. Now these are all also known as points in phase. ये जो आपके पास 4 points हैं, you can also call them points in phase. अगर आप इन points को join कर लो ऐसे एक साथ, इनको ऐसे join कर लो, this line is called crest. This is just an imaginary line. इन सारे crests को एक साथ join कर लो, this is called as wavefront. इन सारे crests को join कर लो, this is a wavefront. And if you observe this closely, you will find one thing, that the wave is moving to the right and the wavefront is making an angle of 90. Wavefront is making an angle of 90 with the wavefront. So wavefront or wave हमेशा 90 degree पे बनते हैं. Wavefront and wave always form at an angle of 90 degrees. अगर मैं देखूं ये wave move कर रहे to the right, wave is going to the right like this. So the wavefront makes a 90 degree with this. If you look at this, आपके पास एक और चीज देखिएगा. अब मैं सारे crests को join करवाने की कोशिश करता हूँ. Troughs को, sorry. This is one trough. This is another trough. One trough, another trough, and so on. So ये जो आपके पास line बनी हुई है, this is a wavefront. A line that joins all the crests or all the troughs. And it is always at 90 degree to the direction of the wave. अच्छा wavefront यूं भी बन सकते हैं, देखो. ये वाला point, ये वाला point, ये वाला point. These 4 points are same points, points in phase. ये वाला point, ये वाला point, ये वाला point, ये वाला point. These are same points, points in phase. ये वाला point, ये वाला point, ये वाला point. These are all same points, points in phase. ये सब के सब क्या है बेटे? ये आपके पास wavefronts. Wavefronts are at 90 degrees to the direction of the wave. Right? Any problem, any confusion so far? So यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है. Wavefronts are basically imaginary lines that can join all the crests. ये सारे crests को join करने वाला जो line है, it's called a wavefront. इसको हम wavefront बोलते हैं. This is a wavefront. Yusuf, this is a wavefront. This is a wavefront. सही है. अब यहाँ पर important क्या है? देखो, एक wavefront से लेकर दूसरे wavefront तक का जो distance है, it's just like distance between two crests. So this is one wavelength. एक wavefront से लेकर दूसरे wavefront तक का जो distance है, it's just distance between two crests. So it's one wavelength. So इसका मतलब है 2 wavefronts अगर आपके पास बनेंगी ऐसे ना, ये 2 wavefronts हैं, तो 2 wavefronts के बीच का जो gap होता है, it's equivalent to 1 wavelength. Right? So इसको आप यूं draw कर लो कि this is the direction of the wave. This is the wave. And this is the wave front. They are always at 90 degrees. They are always at 90 degrees. So usually when we'll be exploring waves further, we'll not be drawing waves, we'll be drawing wave fronts. हम क्या बना रहे होंगे बेटे? Wave fronts बना रहे होंगे. अच्छा, ये आपने अगर लिख लिए हैं,
Huda, is everything clear? Yusuf, your friend समझ आ गई? Right. इसके बाद अगली जो चीज है, let's look at that. एक छोटी सी example. There are two waves. Now, I would want you to tell me the time period of the first wave. जरा जल्दी से मैसेज में टाइम पीरियड बताओ मुझे. पहले जो वेव है उसका टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड मैंने आपको क्या बताया था? इट्स द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट्स. सही है. सो और इट कैन बी शाबाश हुदा, बिल्कुल ठीक आंसर है. तो देखो ये वेव शुरू कहां से हो रही है? वेव स्टार्ट हो रही है यहां से. दिस इज वन क्रेस्ट. दिस इज वन क्रेस्ट. इस क्रेस्ट को अगर आप चेक करो, इट्स एट 0.25 seconds. Then the next consecutive crest is this one. So अगर आप चेक करो, it's at 1.25 seconds. So basically the distance between these two crests, sorry, distance will be, the time between these two crests is what? It's 1 second. If you look at the next one, if you begin right here at this point, so basically what's happening? Where is the same next point? It's right here. It ends at 1 second. So it's the time for one wave, 1 seconds. If the time for one wave is 1 second, can someone also tell me the frequency now? Frequency is 1 upon time period for one wave. It will be 1 hertz as well. दूसरा वाला जो wave है, ये check करो. What's the time period for the next wave? What is the time period for the next wave? शाबाश, 0.5 सेकेंड. वेव यहाँ स्टार्ट हो रही है, ऑल द वे वेव यहाँ पर रिपीट हो रही है. So it's 0.5 seconds. Hence time period क्या होगा इसके बेटा? 0.5 सेकेंड हो. टाइम इसका 0.5 सेकेंड होगा. अगर टाइम 0.5 सेकेंड है तो फ्रीक्वेंसी ऊपर वाले की तो 1 हर्ट्ज थी, नीचे वाले की क्या हो जाएगी? It's number of waves upon time taken. So how many waves are there? 1, 2 waves. In how much time? In 1 second. So 2 waves in 1 second is 2 hertz, right? Frequency क्या बताया था आप लोगों को बेटे? It's equals to number of waves per unit time. Number of waves per unit time. So how many waves in the first one? There are, let's say अगर मैं यहाँ से start करूँ, there are 2 waves in 2 seconds. So 2 upon 2 is 1. Frequency 1 hertz होगी. And इस वाले में there are 2 waves in 1 second. So 2 upon 1 is 2. Frequency 2 hertz over. Right. Any problem, any confusion? Is this clear? उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है वेव स्पीड. वेव स्पीड की अगर हम बात करते हैं बेटे, वेव स्पीड क्या होती है जरा इसको देखिएगा. वेव स्पीड, वेव स्पीड की जब मैं बात करता हूँ, सो वी ऑलरेडी नो फ्रीक्वेंसी. तो आपके पास एक और फॉर्मूला है ये, लेकिन बिफोर आई मूव ऑन टू दिस कि फ्रीक्वेंसी का ये वाला फॉर्मूला कैसे आता है, वी नीड टू अंडरस्टैंड वेव स्पीड. और वेव स्पीड क्या होती है? वी नो दैट स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है. सो अगर स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम है, मुझे ये बात बताओ, बल्कि इसको मैं यहाँ कर दूं तो ज्यादा अच्छा होगा. Speed is distance upon time. V is speed. V is speed. V is speed. Again, and speed is distance upon time. Now, the distance that a wave covers, the distance that one wave covers is what? The distance that one wave covers is equals to one wavelength. That's lambda. And the time that it takes for one wave to complete is capital T.
एक वेव को कंप्लीट होने के लिए जो टाइम चाहिए होता है दैट्स टाइम पीरियड कैपिटल टी। अगर मैं इन दोनों को जरा सेपरेट करके लिखूं तो व्हाट विल इट बी? इट विल बी 1/t। 1/t को मैंने अलग लिख दिया और लैम्बडा को मैंने अलग लिख दिया, 1/t इंटू लैम्बडा। अब हमें पता है कि 1/t क्या चीज होती है? देखिए 1/t होती है फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज 1/t? 1/t होता है फ्रीक्वेंसी, सही है। अगर 1/t फ्रीक्वेंसी है तो मैं बहुत आसानी से लिख सकता हूँ कि स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ। ये मेरे पास वेव स्पीड का इक्वेशन बन जाएगा, सही है। स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ लैम्बडा। कोई मसला, कोई परेशानी है इसमें? अगर ये बात समझ आ गई है, थोड़ा सा इसको आगे लेकर चलते हैं। और ये तो मैं तुम लोगों को समझा दिया था, खैर आगे बढ़ते हैं। एंड मुझे ये बताओ जरा जल्दी से, टेल मी which label with letter X। मैं इसको एक काम कर लेता हूँ, मैं इसको लेबल कर देता हूँ ABCDE। आप मुझे बताओ एम्पलीट्यूड कौन सा है? व्हाट इज द एम्पलीट्यूड? ऑलराइट, बहुत सारे लोग कहेंगे यू कैन ऑल्सो, यस ए, ठीक है, सही है। सो ए इज द एम्पलीट्यूड। क्यों? क्योंकि हमारे पास एम्पलीट्यूड क्या होता है? इट्स द हाइट ऑफ अ वेव, इट्स द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, सही है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। ओके, वेवलेंथ क्या है बेटा? ए बी सी डी ई, डी, शाबाश। सो डी, it's basically distance from one point to the next same point, that's wavelength। perfect हो गया, शाबाश। राइट, अब आगे एक काम और करते हैं। alright, state what, okay, a long rope fixed at one end is being used by a student to demonstrate transverse wave। State what student does to the rope to produce the transverse wave। स्टूडेंट रोप के साथ क्या करेगा? यस, तो he oscillates it up and down। oscillate या फिर vibrate, और vibrates it up and down। On figure 6.1, show the distance labeled lambda corresponding to the wavelength of the wave। So it basically starts from one crest to the next crest. This is the wavelength lambda, or you can just do it like this as well, one trough to the next trough. This is the wavelength lambda। Then label A corresponding to the amplitude। So amplitude basically बातों का लोग जल्दबाजी में ये पूरा लेवल कर लेते हैं, ऐसा नहीं भाई। This is the amplitude only। Mean position set, maximum displacement। This is the amplitude only। Mean position set, maximum displacement। This is the amplitude only। Mean position set, maximum displacement। Right? Any problem, any confusion? Mariam, are you there? चलो, अगर आपको ये बात भी समझ आ गई है तो अब एक चीज और करते हैं। हमारे पास वेवलेंथ आ गई है, हमारे पास एम्पलीट्यूड आ गया है। सजेस्ट व्हाट द स्टूडेंट कुड डू टू रिड्यूस द वेवलेंथ। देखो, वेव स्पीड की इक्वेशन मैंने आपको बताई, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्बडा।
अगर यहाँ से मैं f को सब्जेक्ट बनाऊं तो f will be equals to v upon lambda। वेवलेंथ को मुझे रिड्यूस करना है तो फ्रीक्वेंसी को मुझे बढ़ाना पड़ेगा, वाइब्रेशंस को मुझे बढ़ाना पड़ेगा, ऑसिलेशंस को मुझे बढ़ाना पड़ेगा, ऐसा ही है। सो वी विल इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस, increase the frequency of vibrations. So we'll increase the frequency of oscillations. Right. उसके बाद ये क्वेश्चन है, show how a longitudinal wave differs from a transverse wave. So longitudinal wave में और transverse wave में फर्क क्या बताया था आप लोगों को? Longitudinal wave, longitudinal में क्या होता है? Direction of vibration, direction of vibration, direction of vibration of medium is parallel to direction of wave propagation. एंड ट्रांसवर्स में क्या होता है? यही चीज आप परपेंडिकुलर करके लिखोगे, सिर्फ और सिर्फ पैरेलल के बजाय आ जाएगा वर्ड परपेंडिकुलर। अच्छा, उसके बाद उसने आपसे कहा कि साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी 7.5 किलोहर्ट्ज है और स्पीड दी हुई वेवलेंथ निकालना है। So you know the frequency, you know the speed, you need to find the wavelength. V equals f lambda, ये मैंने इक्वेशन बताई थी। यहाँ से अगर आप देखो तो वेवलेंथ हो जाएगी, क्या फॉर्मूला बनेगा? V अपॉन लैम्ब्डा लिखो, इक्वेशन लिखो, उसमें वैल्यूज डालो, तब जाके आंसर कैलकुलेट करना। डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप फंसोगे। मल्टीप्लाई बाय 1000, के का मतलब होता है 1000। फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, V अपॉन लैम्ब्डा। स्पीड कितनी गिवन थी? स्पीड गिवन थी 6100। तो जैसे मैं लिख रहा हूँ पहले, आप लोग भी पहले लिखा करो, बाद में कैलकुलेटर में डाला करो, अपॉन 7500। क्या आंसर आ रहा है? 0.813। मुबशर भाई कहाँ रह गए थे? आप कहाँ चले गए थे मुबशर? बेटा मिली सेकेंड्स नहीं है, किलो हर्ट्ज मैंने कर लिया है। 75, 7.5 तो 7500 हो गया। एंड दिस इज 61 100 meters per second, it's not milliseconds।
अच्छा, नीचे वाला पार्ट मैंने डिस्कस नहीं किया तो उसको मैं अभी नहीं करा रहा। चलिए, यहाँ तक हमने कर लिया। ये क्वेश्चन एक दो और भी करने थे, लेकिन अभी हमारी क्लास का टाइम खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे फिर प्रॉपर्टीज से, रिपल टेंस से। उसमें हम फिर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को करने की कोशिश करेंगे। See you then. Until then, Allah Hafiz. If someone has any question, Huda, किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।